Hello all and welcome to my channel. आज हम बात करेंगे about the irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome जो है it might sound as a rare disease पर it's quite common. About 25% of the world population is affected by irritable bowel syndrome. तो अब हम जानते हैं क्या पेशेंट प्रोफाइल होता है, क्या प्रेजेंटेशन होता है पेशेंट का इन irritable bowel syndrome. So the patient in irritable bowel syndrome generally presents with ऑल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन, कभी कब्जियत होता है, कभी डायरियल सिम्टम्स होते हैं और ये रिपीटेड साइकिल्स में होते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो ये जो साइकिल है इट इज़ वेरी मच एग्जॉस्टिव फॉर द पेशेंट. साथ ही साथ कभी कभी एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है ड्यू टू गैस एक्सेसिव गैस प्रोडक्शन और ये सारे सिम्टम्स ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल पेन, एवरीथिंग इज रिलीव्ड ऑन passage of the stool. So this is cardinal of a irritable bowel syndrome. So actually the problem is that पेशेंट्स जो होते हैं वो मल्टीपल डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं बिकॉज जो रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट है इट इज़ वेरी स्लो. मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सारे एब्डोमिनल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं एंड ऑल इन्वेस्टिगेशंस कम नॉर्मल. दिस एड्स टू द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द पेशेंट एज वेल एज द अटेंडर और दिस एड्स टू द मिसरी ऑफ द पेशेंट. सो ये था पेशेंट प्रोफाइल ऑफ द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. अब हम जानते हैं व्हाट इज द कॉज, क्या कारण है, क्यों होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. एक्चुअली द कॉज ऑफ द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज स्टिल अननोन. हाउएवर देयर आर सम हाइपोथेसिस. जो पहला हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि देयर इज इनकोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन और हमारे गट के बीच में. नॉर्मली जो हमारा गट है वो फूड मटेरियल को फूड पाइप से धीरे धीरे नीचे की ओर पुश करता है, पर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये जो मूवमेंट है दिस गेट्स अल्टर्ड. कभी ये मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, रैपिडली होगा जिसके कारण डायरियल सिम्टम्स आएंगे, तो कभी ये मूवमेंट स्लो होने के कारण कॉन्स्टिपेटिव सिम्टम्स होंगे. तो दिस इज वन ऑफ द कॉमन हाइपोथेसिस फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. जबकि एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी है, वो ये कहता है कि हाई फूड मैप डाइट्स के कंजम्पशन से भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है. तो हाई फूड मैप डाइट है क्या? हाई फूड मैप डाइट एक्चुअली वो हुआ फूड मटेरियल जिनका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है. अब फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उस पर बैक्टीरिया जो होंगे गट के वो एक्ट करेंगे और गैस प्रोड्यूस के करेंगे जिसके कारण एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा. तो हाई फूड मैप डाइट्स मेनली कंस्टिट्यूट ऑफ मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स एंड polyols. जो कॉमन फूड मटेरियल विच आर रिच इन दीज आई विल गिव दैट इन द डिस्क्रिप्शन. सो जो भी ये हाई फूड मैप फूड मटेरियल्स होंगे उन्हें अपने डाइट में हर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए. लाइक मोनोसैक्राइड्स, दिस विल बी हाई इन फ्रक्टोज, लाइक यू हैव हनी. Disaccrides will be more in milk and milk products, that is lactose. Then oligosaccharides are commonly high in garlic and onion, or polyols is quite common in apple. So I'll give a full description of the food material which are high food map diets that has to be avoided. तो ये था about the hypothesis of causes for irritable bowel syndrome. तो अब हम before going to understand the management हमें कुछ चीज़ अपने पास ये जान लेना है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है इट इज नॉट कंप्लीटली क्योर्ड डिस्पाइट एनी ट्रीटमेंट. यहाँ पर यू वोंट गेट क्योर्ड कंप्लीटली, इसलिए रिपीटेड विजिट टू डॉक्टर इज नॉट नीडेड. रादर व्हाट इज नीडेड इज टू मेंटेन अ फूड डायरी. फूड डायरी कहते हैं वेयर अ पेशेंट नोट्स डाउन व्हाट फूड आइटम्स ही हैज टेकन इन द होल डे एंड कोरिलेट इट विद द सिम्टम्स दैट ही हैज डेवलप्ड. सो यदि मान लीजिए कि कुछ फूड आइटम्स खाने के बाद आपको सिम्टम्स ज़्यादा डेवलप करते हैं, देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट कि ओके दिस फूड मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिम्टम्स ऑफ IBS. सो नाउ आई प्रोसीड टू द मैनेजमेंट. एज आई सेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इन मैनेजमेंट इज डाइट. डाइट में एज आई हैव ऑलरेडी सेड वी हैव टू अवॉइड द हाई फूड मैप डाइट्स. We have to include more and more fiber rich diets like we can have green vegetables ले सकते हैं, salad ले सकते हैं, fruits ले सकते हैं. All these will have high fiber diet. The second perspective है वो होता है psychotherapy and relaxation. क्योंकि कहा जाता है कि जो irritable bowel syndrome है उसके symptoms are aggravated यानी बढ़ जाते हैं on stress. So stress management which can be easily done through exercise, meditation, yoga, all these stuffs, we can reduce the stress level, we can engage ourselves in hobbies and improve the quality of life. So invariably this also helps to reduce the symptoms of irritable bowel syndrome. जो तीसरा पर्सपेक्टिव है वो है यूज ऑफ प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स आर द मेडिसिन जो कि हमारे गट के नॉर्मल फ्लोरा का ग्रोथ को इम्प्रूव करता है यानी उनके ग्रोथ को बढ़ाता है.
because actually this normal flora is needed to for proper digestion of the food material. So probiotics like commonly available drugs like Visilac can be used to reduce the symptoms of irritable bowel syndrome. The चौथा perspective है वो है medicines for symptomatic management. Like if somebody has lots of abdominal pain, we can use antispasmodics. Like you can have cyclopam, you can have meftal-spas. If somebody has lot of bloating of the abdomen, बहुत ज़्यादा distension है, बहुत ज़्यादा gas बन रहा है, he can use PPI like pantoprazole, omeprazole. And then if somebody has lot of these symptoms for long time, we can use gut antibiotics like rifaximin. So these are some of the common medicines that are used. और since ये देखा जाता है कि जो irritable bowel syndrome के symptoms हैं, these are often related to depression and anxiety and stress level. So sometimes antidepressants like fluoxetine is also helpful to reduce the symptoms. तो यहाँ पर even after knowing all the management modalities, मैं एक चीज emphasize करना चाहूँगा कि despite all these treatments, there is no full cure for irritable bowel syndrome. So cure के लिए बार बार डॉक्टर्स के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है. जो सेकेंड पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी स्लो होता है, इसलिए पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना होता है और अपना फूड डायरी मेंटेन करना होता है, जिससे यू कैन पॉइंट आउट व्हाट ऑल फूड मटेरियल्स आर द कल्प्रिट फॉर हिज सिम्टम्स. एक और मैं पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूँगा, दैट इज अबाउट माय ओन क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद द पेशेंट्स ऑफ IBS. जो कॉमन पेशेंट्स दैट आई हैव सीन ऑफ IBS हैज बीन मोस्टली ऑफ कॉन्स्टिपेटिव टाइप. पर यहाँ पर एक कॉशन है कि वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स लाइक यू हैव डल्कोलेक्स, यू हैव ट्रिमेफिन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, क्योंकि बहुत सारे जो कॉन्स्टिपेटिव पेशेंट्स हैं वो लो डोज में लैक्सेटिव्स यूज करते हैं, बट दे शुड अवॉइड द यूज ऑफ स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स बिकॉज इनके लंबे समय के यूज के बाद इट कॉजेज द गट पैरालिसिस. जो गट के नस होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज. सो यहाँ पे इट इज रिकमेंडेड टू यूज माइल्ड लैक्सेटिव्स. यदि सिम्टम्स बहुत माइल्ड है, यू कैन यूज होम बेस्ड रेमेडीज लाइक Isabgol. If symptoms are not controlled with Isabgol, you can switch to Pegred powders. Pegred powders एक तरह का पाउडर बॉक्सेस आते हैं which can be used with the water. If you have not symptoms are not controlled with Pegred, you can go to Prucalopride tablets. So ये तीन modality जो मैंने बताया, that is use of Isabgol or Pegred powders or Prucalopride, इससे there are no side effects despite being used for long period of time. So this is my huge emphasis कि if some patient is there who is having constipation chronically, who is still not known that he's having IBS or not, for constipation please don't use stimulant laxatives, क्योंकि stimulant laxatives के long term use पे gut paralysis का risk होता है. Rather than that, you should use these mild laxatives that I have told you. I'll keep these laxatives in my description for the help of these patients. So this is about the IBS. ये बीमारी कोई बड़ी नहीं है, ये जानलेवा नहीं है. So we need not be worried about this. There is no complete cure and the recovery is very slow. So we need not worry about this. But the problem is the amplitude of financial burden that it puts on the patient due to repeated visits to doctor and repeated investigation. So I hope this video के बाद, if any of my viewers having all these symptoms, उनको एक insight मिला होगा कि about the irritable bowel syndrome, and they would have realized कि these symptoms can be controlled by maintaining a simple food diary and taking some simple medications and precautions. So we need not worry about this. So I hope this video will be helpful to all of you. If you still have any comments or if you still have any queries, you can post it in the comments. I'll be happy to answer those. Thank you for the support to the channel, and stay tuned and subscribe to the channel to be updated on your health. Thank you.